Welcome to Ultimate Biology. Today we are going to learn human stomach in detail. This is a topic, human stomach. We will learn in three head position, next structure, and next function of the stomach in digestion. Position of stomach, where it is present in our body. Now see here, our body get differentiated into this one head. This portion we call it as a neck. This portion we call it as a thorax. And this portion below this thorax we call it as a abdomen. Then these are two forelimbs and lower, that is a hind limb. Stomach, it is present in this abdominal region. This one right hand, this one is the left hand. It is present towards the left. This one towards the left side, towards the ventral side of our body. Then below the diaphragm, it is like this J shape, like this J shape when it is empty. This esophagus leads into this structure. This structure we call it as a stomach, and stomach leads into this duodenum and small intestine. It is present in between esophagus and small intestine. This one is the esophagus. Here small intestine is present. Stomach present in between esophagus and small intestine in the abdominal region, like this. Then structurally this is a stomach. It is a J shape like this structure, and it consists of these parts. One we call it as a fundus. Next this one, this part of this stomach we call it as a cardiac. Cardiac leads into this pyloric. Means the stomach, it consists of three part: fundus, cardiac, and this portion we call it as a pyloric stomach. But in some book, NCERT book, it is differentiated into this one fundus. This bulge portion we call it as a fundus. This portion we call it as a cardiac, and this portion, this one, known as a body of stomach, leads into this narrow pyloric stomach, like this. First part, that is a fundus, bulge part, that is the anterior part of the stomach, this one. And this portion we call it as a posterior part of the stomach. Fundus present towards the anterior side, and in this fundus, air and gases generally they are filled, because here food material it is present in the stomach. Then this portion of the stomach we call it as a cardiac stomach. Cardiac, heart. The medical term of heart is cardiac. Means it is present nearer to the heart, like this. This portion means here heart is present, due to which these region, this part of stomach we call it as a cardiac stomach. In this cardiac stomach, this esophagus it get open here. This one cardiac stomach, and this is a portion, long portion, known as a body of stomach. Body of stomach, it is a main central region. This one is the main central region of stomach. Leads into like this structure we call it as a pyloric stomach, like this pyloric. Means both that side it taper like this, and that portion of that stomach we call it as a pyloric stomach. Now this pyloric stomach leads into three again parts. One is the anatrum, second that is a canal, and third one that is the sphincter. This portion, the pyloric portion, this one, this part of the stomach, this one, that is the antrum, and then antrum leads into this tube-like structure known as a canal, and this canal and this tube-like structure, this one,
the canal which leads into this duodenum. At the junction of canal and duodenum, here this muscular structure which is present, that muscular structure we call it as a pyloric sphincter. In stomach, two sphincters are present. One sphincter which is present here in between this esophagus and this stomach. This esophagus leads into this cardiac stomach, and at the junction here the sphincter which is present, that sphincter we call it as a cardiac sphincter. It is made up of muscle. It acts as a wall. It contract and it get relaxed. And second sphincter which is present in between these pyloric stomach leads into the canal which leads into this duodenum. At the junction here in between canal and duodenum, here one sphincter is present. That sphincter we call it as a pyloric sphincter. What is the function of this sphincter? Once the food from the esophagus comes here in this stomach, the backflow of this food get prevented by this cardiac sphincter, because this cardiac sphincter in case of adult is functional. छोटे बच्चे जो होते हैं, दूध पीते बच्चे, उनमें ये स्पिंक्टर है कार्डियक स्पिंक्टर. इट इज अ नॉन फंक्शनल, उनमें नॉन फंक्शनल होता है, क्योंकि छोटा बेबी जो दूध पीता जो बेबी है, उन्होंने अगर दूध पिया तो कभी कभी वो ऐसा उल्टा गिरता है तो उसके पेट में से दूध जो है मुंह में से बाहर आता है. इट इज ड्यू टू दिस कार्डियक स्पिंक्टर विच इज देयर. उसके स्मूथ मसल्स नॉन फंक्शनल होते हैं छोटे बेबी में. लेकिन जैसे ही थोड़ा वो बड़ा होता है, उसके शरीर में यहाँ जो स्पिंक्टर प्रेजेंट होता है, दैट स्पिंक्टर वी कॉल इट एज अ कार्डियक स्पिंक्टर. दैट स्पिंक्टर बिकम फंक्शनल, और उसके बाद में फूड जो है वापस उसोफेगस से मुंह में से बाहर नहीं आता. इन स्पेशल कंडीशन, अगर आपके स्टमक में टॉक्सिक मटेरियल एंटर होते हैं बाय एनी मीन्स, बाय वाटर, बाय फूड, देन वोमिटिंग जो प्रोसेस है उसमें there is a cardiac sphincter, it get open and all the food material it oozes out like this. At that time it functions, it open. This one cardiac sphincter and this one is the pyloric sphincter. Pyloric sphincter open when the pressure get exerted by the food here, by the chewing food here. This is a pyloric sphincter, it get open, and then the paste form of that food material pushes here into this structure we call it as a duodenum, which is the part of small intestine. Now this stomach, it shows like this two face. One, this face, this one we call it as a convex greater curvature. This one, it shows the convex like this, a convex बहिर्वक्र like this. The lens जो होती है, ऐसी lens जो होती है, we call it as a बहिर्वक्र, convex greater curvature. And this is a portion of the stomach which shows like this, one side which shows like this a depression known as a concave lesser curvature. This one, concave lesser curvature. Now this is the stomach. If you take the section of this stomach, transverse section of this stomach internally, this stomach, it shows these layers. Outermost layer of this stomach we call it as a serosa. This one, serosa. It is a thin mesothelium with connective tissue, in which connective tissues are there, and it consists of a thin mesothelium like these tissues. Beneath this serosa, next layer is there. That layer we call it as a muscularis. Muscularis means made up of muscles. In this layer, circular muscles are present. That muscles we call it as a smooth muscles. इसमें smooth muscles होते हैं. In our body, 3 type of muscles are there. One is the striated muscles. यहाँ जो muscles है पूरे body में, जो स्केलेटल सिस्टम को चिपकी हुई है, दैट इज द स्केलेटल मसल्स और स्ट्राइटेड मसल्स. और and another muscles which is present in the gut, esophagus, stomach, small intestine, large intestine,
rectum. These muscles we call it as a smooth muscles. इसके अंदर जो हमारा एलिमेंट्री कैनल है, इसके मस्कुलरिस लेयर में जो मसल्स प्रेजेंट होती है, दैट मसल्स वी कॉल इट एज अ स्मूथ मसल विच वर्क अंडर द एटोनोमस नर्वस सिस्टम. और ये हमारे विल पावर पे काम करती है. ऐसे हमारी इच्छा शक्ति पे ये मसल्स काम करती है, वो हमारी इच्छा शक्ति पे काम नहीं करती. इट डू नॉट वर्क अंडर अवर विल पावर, इट वर्क अंडर ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम. So in this portion muscles are present, and muscles we call it as a smooth muscles, and this portion we call it as a, or this a second layer we call it as a muscularis. Muscles are present. Circular muscles and longitudinal muscles are there, and these circular muscles and longitudinal muscles, they play important role in churning of the food material. Food material को चूर्ण करने में स्टमक में ये काम में आते हैं. And due to peristaltic movement also, food material get pushed forward. These muscles play important role throughout the gut. Now these muscularis gets differentiated into outer longitudinal and inner muscular. Inner circular, muscular like this, and outer longitudinal like these muscles are present in this layer. Beneath these muscularis, next layer is there known as a submucosa. And this submucosa, it is made up of loose connective tissue. इसमें loose connective tissue पाए जाते हैं. And beneath this submucosa, next layer is there. This layer we call it as a mucosa. Mucosa, mucus secrete करने वाली layer. Mucus material, that is a slimy material which secretes in the stomach, help in the process of digestion. This layer we call it as a mucosa, consists of nerve, then it consists of blood, then it consists of a lymph vessel. In next video we are going to see again this portion of this mucosa in a detail. Mucosa जो है उसकी लेयर कैसी होती है, villi क्या है, then microvilli क्या है, all the cells which are present in these villi brush border, how they modified into the glands, how many type of glands they are present here, and which material they secretes, we will see in the next video in detail. Now this layer we call it as a mucosa, which secretes the mucus and various digestive enzymes. This layer is important layer, and it shows many like these foldings. It shows many foldings, due to which, and to these foldings, villi, we call it as villi, microvilli also present on these foldings. Many like these columnar cells are present, which increase the surface area of absorption as well as the digestion also. And beneath these mucosa here, the space which is present in the stomach or in the gut, we call it as a lumen. What is it? Lumen, where food material comes, all the digestive juice or that the stomach, it gets secretes here and food material get digested in this portion, we call it as a lumen. This one we call it as a TS of gut, TS of that stomach. This one, TS of stomach, it consists of 3 layers, serosa, muscularis, and next we call it as a mucosa. Now see here, human stomach, it is like this, very simple. It consists of this fundus, a cardiac, then body, then like this a pyloric region. But in case of big animal, cattle, for example, in case of a cow, in case of a buffalo, like this, those animal which dwell on herbs, we call it as herbivores. Means they only ate herbs, and it is made up of cellulose, that plant cells or plant material, it is made up of that cellulose, that cell wall, it is made up of cellulose. So such organism we call it as ruminant animals. Ruminant animal stomach. It is not a simple type of stomach, it is a compound stomach, because it consists of rumen, first part of the stomach, second reticulum, next it leads into this omasum,
and omasum leads into this abomasum. 1, 2, 3, 4, like this, the big parts are present. We call it as a compound stomach. Our stomach is simple. It consists of like this portion, J shape, like this portion. But here, separate rumen, separate reticulum, separate omasum, separate like this abomasum is present to digest that cellulosic material, like this. Okay. Now see how the digestion takes place. ये हो गया स्ट्रक्चर. पहले हमने पोजीशन देखा, then we have seen the structure of stomach. Now we will see how the stomach functions in the process of digestion. Which material get digested in our stomach? Stomach, this one we call it as a mucosa. This portion of this stomach, mucosa, it secretes various digestive enzyme. That juice, collectively we call it as a gastric juice. In this gastric juice, the digestion which takes place, that digestion takes place by chemical, due to which we call it as a chemical digestion. And the muscles play important role to churn these food material, mix these food material, and convert this food material into paste-like structure. That type of digestion we call it as a mechanical type of like this digestion. In the stomach, like this chemical digestion is there, and muscles play important role in case of this mechanical digestion. Chemical digestion, this inner lining, inner lining of these mucosa consists of many columnar like this cell. Out of these cell, some cell get modified and they secrete. They perform the function of secretion. Some cells, यहाँ के कुछ सेल, यहाँ के like this, that cells, columnar cells, get modified into gland-like cells, glandular cells, and they differentiated into like this a type. Some cell differentiated into parietal or oxantic cell. यहाँ होते हैं parietal or oxantic cell. Some columnar cell get modified, and we call it as parietal or oxantic cell. And this parietal or oxantic cell secrete HCl, that is a hydrochloric acid. Hydrochloric acid gets secreted in our stomach, due to which in this stomach it becomes acidic in nature. The food material get mixed in acid. That acid we call it as a HCl. This parietal or oxantic cell secrete HCl, and intrinsic factor, it secretes these HCl and intrinsic factor essential for absorption of vitamin B12. These are two, HCl and this intrinsic factor, which is essential for absorption of vitamin B12, secreted by these parietal or oxantic cell. Secreted by parietal or oxantic cell. Now these HCl play very important role in the digestion of food material. First role, in this HCl, the complex organic food material which is there, that complex organic food material get break down into small pieces, break down into like this a simpler, like this a substance first. Then see here, hydrochloric acid stop the action of saliva in stomach. Large amount of saliva gets secreted mixed with the food material here. Some sort of that starch get digested in our mouth itself, and that alkaline medium, that saliva, it is alkaline in nature. That alkaline medium, that the food which get mixed, that comes ultimately through the esophagus into the stomach. Now due to the action of these HCl, the enzymatic activities which takes place, that salivary amylase
action it get stop, because in the stomach SCl is there and SCl stop the action of saliva in stomach. Next function of SCl, it kill the disease causing bacteria. It kill the disease causing bacteria. यानी आप लोग पानी जो पीते हो या खाना जो भी आप लोग खाते हो, गलती से अगर उसमें कोई डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट है तो यूजफुल अगर बैक्टीरिया है, फॉर एग्जांपल कर्ड, एक वाटी हमने कर्ड जो है दही को हमने सेवन किया है, तो उसके अंदर जो लैक्टोबैसिली बैक्टीरिया प्रेजेंट है उसको किल नहीं करता है, बिकॉज दैट बैक्टीरिया आर द यूजफुल बैक्टीरिया. बट दोज बैक्टीरिया विच आर हार्मफुल बैक्टीरिया, डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया विच एक्ट एज अ एंटीजन इन आवर बॉडी, जो बीमारी क्रिएट करते हैं हमारे शरीर के अंदर, व्हेन दे कम्स इन द स्टमक दैट बैक्टीरिया गेट किल ड्यू टू SCl, means it protect our body from the disease causing organism. Then there is a hydrochloric acid activates the pepsin. It activate the pepsin. पेप्सिनोजन जो है उसको एक्टिवेट किया जाता है, पेप्सिन. एंड पेप्सिन जो है ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में काम में आते हैं. सम सॉर्ट ऑफ दैट प्रोटीन डाइजेस्ट इन योर स्टमक. यानी आपने अगर दाल अगर सेवन की है या अंडे अगर खाए हैं, ऐसे टाइप का जो भी प्रोटीन हमने अगर यूटिलाइज किया है, सम सॉर्ट ऑफ प्रोटीन गेट डाइजेस्टेड इन योर स्टमक. पूरा प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होता. कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड मटेरियल ओनली टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन, नॉट इन स्टमक. सो सी हियर, it activate the pepsin, means the pepsin it get activate in presence of stomach. Pepsins they are inactivated in condition in the stomach, but when the stomach secrete SCl, जब stomach SCl को secrete करता है at that time, pepsin it get activate and it digest, it help in the digestion of proteins in our body. जो भी आपने दाल या अपने जो भी ऐसे टाइप के पल्सेस जो भी यूटिलाइज किए हैं, या जो भी मांस मछली या जो भी हम लोग सेवन करते हैं, या जो भी ऐसे टाइप का मटेरियल इन विच प्रोटीन इज प्रेजेंट, अंडे वगैरह जो है उसमें अल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है, दैट मटेरियल गेट डाइजेस्टेड. सम सॉर्ट ऑफ प्रोटीन गेट डाइजेस्टेड, नॉट ऑल प्रोटीन, ओके, इन द स्टमक. सम सॉर्ट ऑफ प्रोटीन गेट डाइजेस्टेड इन स्टमक. नाउ दिस SCl, it consists of pH 1.5 to 1.8 like this. Now see, second type of like these cells which get here modified. यहाँ ब्रश बॉर्डर टाइप के सेल्स होते हैं. ये तो विलाय है, on this villi like this columnar like this cells are formed, and out of these columnar cells, इनमें से ये columnar जो सेल है इनमें से some columnar cell they modified, ये ब्रश बॉर्डर फॉर्म हो रही है यहाँ पे, यहाँ which increase the surface area. Some these cells, columnar epithelial cells get modified into next another type of the cell, we call it as a mucous neck cell. mucous neck cell में वो modify होते हैं, and they release a mucus, they secrete a mucus. They modify some columnar like this cell, ऐसे columnar like this cells होते हैं, और some columnar like this cell get modified into, or they modify like these and they secrete. ये सिक्रेशन का काम करते, ग्लैंड्स का काम करते, ग्लैंड्स के जैसा काम करते. एंड दे सीक्रेट म्यूकस. विच सेल सीक्रेट म्यूकस? म्यूकस नेक सेल सीक्रेट म्यूकस. एंड व्हाट इज द रोल ऑफ दिस म्यूकस? सी हियर, आपके स्टमक के अंदर SCl सीक्रेट हो रहा है. ज़्यादा SCl अगर आपके स्टमक में सीक्रेट हो गया तो इनर लाइनिंग जो है स्टमक की, दिस इनर लाइनिंग और दिस ऑल द सेल्स विच आर प्रेजेंट ऑन दिस विलाई, ये सेल जो है, नाजुक जो सेल है, SCl के प्रभाव से डैमेज हो सकते हैं. तो ये सेल को प्रोटेक्ट करने के लिए सम सेल दे सीक्रेट म्यूकस, दैट सेल वी कॉल इट एज म्यूकस नेक सेल. दे सीक्रेट म्यूकस एंड प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ आवर स्टमक. इनर लाइनिंग विलाई के ऊपर जो ब्रश बॉर्डर है, डिफरेंट लाइक दिस सेल्स विच आर फॉर्म कॉलमनार लाइक सेल, हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ दैट डाइजेशन. ये इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक, उसको प्रोटेक्ट करने का काम ये म्यूकस नेक सेल करते हैं, बिकॉज दे सीक्रेट म्यूकस. और म्यूकस यहाँ आता है पूरे इसके यहाँ, एंड ड्यू टू दिस म्यूकस
Due to HCl, this inner lining of this stomach, it get protected. Mucus, it is protective in nature. Mucus lubricate food. This mucus lubricate your food. स्टमक में फूड मटेरियल आने के बाद फूड मटेरियल म्यूकस में घुल जाता है. लाइक दिस म्यूकस उसके ऊपर सीक्रेट होने के बाद म्यूकस गेट मिक्स विद दिस फूड मटेरियल एंड इट लुब्रिकेट दैट फूड. It lubricate the food and proteins. It lubricated the food and proteins and inner lining of the stomach. And that inner lining of stomach, it get protected by these mucus also. So second cells, that is the mucous neck cells which is present in the inner lining of the stomach, play important role which secrete the mucus. Third cells, इनमें से कुछ सेल जो है तीसरे टाइप के सेल्स है, we call it as a peptic or chief cell. उसको पेप्टिक और चिप सेल कहा जाता है. इनमें से कुछ सेल दे मॉडिफाई लाइक दिस एंड दे सीक्रेट्स दे प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन. प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन, इट इज इनएक्टिव and in presence of HCl, this proenzyme pepsinogen, it becomes active and get converted into this pepsin. And pepsin, now see here, this proenzyme pepsinogen get active and it becomes pepsin. Pepsin, which is formed, that pepsin hydrolyze, due to this pepsin hydrolysis of a protein takes place, and in presence of this pepsin, protein get converted into proteases and peptones. ये proteases और peptone में ये converts होते. Some sort of protein get digested in your stomach. पूरा protein digest नहीं होता. Okay, like this. Now see. Then some cells are there, they release weak lipase enzyme. It release the lipase. Lipase जो है release होता है stomach में, but it is a weak in nature. Weak lipase enzyme get released which hydrolyzes small amount of fats, which hydrolyzes the small amount of fat into fatty acid and glycerol. यानी आपके स्टमक में फैट का मीनिंग होता तेल. जो भी सब्जी में हम लोग तेल यूटिलाइज करते हैं, वो सब्जी में जो तेल यूटिलाइज करते हैं या जैसे भी आपके स्टमक में फैट आता है, some sort of that fat, very few amount of that fat, it get digest in your stomach. Complete fat digestion takes place in small intestine. स्टमक में बहुत ही कम फैट डाइजेस्ट होता है. So due to these weak lipase enzyme, hydrolyzes a small amount of fat and तेल into fatty acid and like this glycerol. Next here renin is there. ये important है. Renin, this one renin. Renin only secreted in infants. जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें ही renin जो है secretes होता है. Renin, that is a proteolytic enzyme found in gastric juice of infants. जो gastric juice है infants का छोटा, जो दूध पीते बच्चे हैं उनमें ही renin जो है रिलीज होता है. What is the function of this renin? Some cell here modify and they release renin in infants only. What is the function of this renin? Renin help in the digestion of milk. क्योंकि वो दूध ही पीते हैं वो बच्चे, उनका दूध जो है डाइजेस्ट करने में रेनिन मदद करता है. दूध को फोड़ा जाता है into curd. That is, we call it as see here, curding of milk. It is only due to this renin, and then various enzyme act in that small baby's stomach and that milk it get completely digested. Okay, like this. छोटा जो जिसको हम बोलते शीप है, उसका जो छोटा बच्चा जो होता है लैम, like this, उनके शरीर में भी रेनिन जो है काफ़ी मात्रा में सिक्रेट होता है. We are the adults, हमारे इसमें ये रेनिन सिक्रेट नहीं होता. थोड़ा बच्चा बड़ा होने के बाद में चलने लगता है तो उसके बॉडी में रेनिन सिक्रेट नहीं होता. दूध पीता बच्चा है उसके ही शरीर में रेनिन सिक्रेट होता है. और जैसे जो शीप है या गोट है, उनके जो छोटे बच्चे होते हैं लैम वगैरह लाइक दिस, उनके इंटेस्टाइन में जो है ये स्टमक में ये रेनिन ज़्यादा मात्रा में सिक्रेट होता है. और यही रेनिन को निकाला जाता है उनके शरीर में से
चीज़ फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है, लार्ज अमाउंट ऑफ जो मिल्क होता है ये शीप का या गोट का, उसमें रेनिन को, इनके जो लैम होते हैं उनके बॉडी में से, उनके स्टमक में से, जो छोटे बच्चे हैं उनके लैम, उनके स्टमक में से रेनिन को निकाला जाता है छोटे कंटेनर में, और इसी रेनिन को जो है, जो ज़्यादा मात्रा में जो दूध होता है उसमें डाला जाता है, एंड दिस रेनिन ब्रेक डाउन दैट मिल्क लाइक दिस, सेपरेट फैट्स एंड सेपरेट लाइक दिस, उस दूध को फोड़ा जाता है उसमें फैक्ट्रियों में. नाउ सी हियर, ये रेनिन है. देन इन दिस स्टमक food mixed with gastric juice, these all content which is there, that is this HCl, then the mucus, then the proenzyme pepsinogen, then we call it as a weak lipase, water and all these things in the renin, these collectively we call it as a gastric juice. Food mixed with the gastric juice in this stomach. This stomach store food for 4 to 5 hours, 4 से 5 घंटे तक फूड मटेरियल को स्टोर करता है हमारा स्टमक. हम अभी स्लाइड में देखने की कोशिश करेंगे कि विच मटेरियल गेट डाइजेस्टेड इन हाउ मच टाइम लाइक दिस, कितना वक्त लगता है कौन से फूड मटेरियल को. चावल अगर आप खाते हैं तो कितने टाइम में वो डाइजेस्ट हो जाता है. मछली अगर आप लोग खाते हो तो कितने टाइम में वो डाइजेस्ट होती है. नट्स अगर हम लोग खाते हैं तो कितने टाइम में वो डाइजेस्ट होते हैं हमारे शरीर के अंदर. हम स्लाइड से उसको समझने की कोशिश करेंगे इसके बाद में. नाउ एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर, देन सिंपल शुगर एंड अल्कोहल लाइक दिस मटेरियल गेट एब्जॉर्ब फ्रॉम दिस स्टमक. कंप्लीट फूड मटेरियल डू नॉट डाइजेस्ट इन योर स्टमक. अब हम इसको ऐसे समझने की कोशिश करते हैं कि जो भी हम खाना खाते हैं उसमें जो रोटी होती है, दैट रोटी यानी वो बनती है गेहूं से, उसको पिसा के हम लोग लाते हैं. जो आटा होता है इट इज़ नथिंग बट स्टार्च, वो एंडोस्पर्म है, स्टार्च है. और रोटी जब हम खाते हैं, दैट रोटी व्हेन कम्स इन आवर स्टमक ड्यू टू द एक्शन ऑफ दिस ऑल एंजाइम, सम सॉर्ट ऑफ दिस स्टार्च गेट डाइजेस्टेड इन ग्लूकोज. ज़्यादा कंप्लीट डाइजेशन स्टमक में नहीं होता, थोड़ा डाइजेशन होता है. और दाल वगैरह जो भी हम लोग खाते हैं, प्रोटीन का थोड़ा डाइजेशन स्टमक में होता है, ज़्यादा नहीं होता. जो भी सब्जी में जो तेल होता है, सम सॉर्ट ऑफ दैट फैट इट गेट डाइजेस्टेड ड्यू टू द एक्शन ऑफ दिस वीक लाइपेज एंजाइम विच इज सिक्रेटेड इन दैट स्टमक. देन मिनरल जो होते हैं थोड़े सेपरेट होने लगते हैं लाइक दिस. ऑल दिस मटेरियल यानी कंप्लीट डाइजेशन हमारे स्टमक में नहीं होता. सम फूड. नाउ सी द डायमेंशन ऑफ उसोफेगस, स्टमक एंड ड्यूडेनम. Esophagus, Anna Nalika, it measures up to 10 inches in long, means it is a 25 centimeter long. Esophagus, Anna Nalika, जो open होती है, open into this stomach. This esophagus leads into this stomach. इसकी जो लंबाई है वो है 25 centimeter. Then stomach, empty stomach, 12 inches long and 6 inches is the width of our stomach. And this is the pyloric region, this one pyloric stomach leads into this C shape, this one structure we call it as a duodenum, which is the first part of small intestine. It measures up to 25 to 30 centimeter in length like this. So this is the dimension of esophagus, stomach and this duodenum. Now see, पानी पीने के बाद कितना टाइम लगता है डाइजेस्ट होने के लिए. नट्स खाने के बाद में कितना समय लगता है उसको डाइजेस्ट होने के लिए. वेजिटेबल्स खाने के बाद में कितना समय लगता है उसको डाइजेस्ट होने के लिए. वी विल सी हियर. इफ यू टेक water take 0 minutes to digest. Now if you take this potato, आलू अगर हमने सेवन किए हैं तो potato it is nothing but a underground modified stain in which starch is present.
इसमें स्टार्च होता है। कच्चा अगर आलू आपने खाया है तो माउथ में ड्यू टू द एक्शन ऑफ टाइलिन डाइजेस्ट नहीं होता। जो बॉयल आलू है, कुकड अगर आलू है, इट गेट डाइजेस्ट ड्यू टू द एक्शन ऑफ दैट टाइलिन इन योर माउथ। लेकिन यही आलू अगर पेट में आते हैं यहाँ पे, इन दिस स्टमक विद द एक्शन ऑफ दैट वेरियस gastric juice, some sort of that potato, it get digest in your that stomach, and it take potato take 90 to 120 minutes for complete digestion in stomach as well as in a small intestine. इतना टाइम लगता है उसको। Then if you ate this vegetable, this vegetable take 30 to 40 minutes for complete digestion. कुछ वेजिटेबल स्टमक में डाइजेस्ट होंगे और फिर बाकी वेजिटेबल जो है when it comes in the small intestine, it get completely digest. Vegetable takes 30 to 40 minutes for complete digestion in stomach and in our small intestine. Then nuts are there. This one nuts. These are nuts. Some sort of these nuts get digest in the stomach. Complete digestion nut का नहीं होता, लेकिन जैसे ही वो small intestine में जाएंगे at that time complete digestion of these nut take 180 minutes to digest. Then these are fruits which are there. That fruits it take 15 to 20 minutes for complete digestion in stomach as well as in that small intestine. In stomach some sort of this fruit it get digested, and that complete that starch what it may be present in that food, but these fruits, when it comes in the small intestine, it take this one fruits in stomach as well as in the small intestine, means these fruit take 15 to 20 minutes for complete digestion. Then cooked vegetable it takes like these 40 minutes. Then in coming video, next video, we are going to see the structure of this liver. Then what is the role of this liver in the digestion? How it form bilirubin and biliverdin, where it gets stored, what is bile salt, like this. And this gland which is there, that gland, this one which is the important gland, that is a pancreas. इसको हम डिटेल्स में नेक्स्ट वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। Secretion of liver, secretion of pancreas, and secretion of that small intestine, that intestinal juice. How the complete digestion takes place in the small intestine, we will see in next coming video. This one, that is a small intestine. इसकी लंबाई कितनी होती है, हाउ द फूड मटेरियल गेट डाइजेस्टेड इन दिस पोर्शन, एंड हाउ द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल पुश हियर इन दिस पोर्शन इन दिस असेंडिंग कोलन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन. ये लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स है, दिस वन रेक्टम एंड दिस वन वी कॉल इट एज व्हाट, एनस. ये सब जो है हम नेक्स्ट जो वीडियो है इसके बाद का, उसमें हम डिटेल्स में जानने की कोशिश करेंगे. डियर व्यूअर्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए. और भी हम अच्छे वीडियो हम आपके लिए लेकर आएंगे. नेक्स्ट वीडियो कंप्लीट डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन का हम लोग जल्दी ही रिलीज़ करेंगे.